Hello to all my subscribers, especially the new ones, and those of you who are returning to watch these videos. If you haven't subscribed already, please consider subscribing. When you subscribe, you encourage me to produce more content and to produce better content. Thank you. Okay. Having said this, let's begin this video. As you can see, this video is a static sort of me talking into the camera and getting my view across. One thing I'm going to do with this video is that I'm going to keep switching between English and Urdu because it has been suggested that I should make content in Urdu or use both languages, since a lot of people have difficulty understanding English in Pakistan or do not speak English, so it's better if I can reach them as well. Right? So here we go. जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो मैं 2 ज़ुबानों में बनाऊंगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा मैं, और ताकि मेरा नुक्ता नज़र बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंच सके. ठीक है, तो ज़रा बर्दाश्त करना होगा. अगर आप सिर्फ उर्दू स्पीकिंग है तो मैं बीच में अंग्रेज़ी में जाया करूँगा. ठीक है, ओके. First point, couple of days back, 3 days back, I posted a video, my first vlog. When I posted and I was at the market and I commented that nobody is taking the SOPs, the procedures seriously. Nobody, people are rarely bothering with masks and people are not covering up their faces or maintaining social distance. Since that video, in my extended in-laws, towards my in-laws, the extended family, 3 people have died. 2 from the same household, husband and wife, within days of each other, and another relative, all from COVID. And here is the thing that we need to consider, because there is this number one fallacy going on in this world, in this country, is if you are healthy, or you have maintained a healthy lifestyle, you will not be affected badly by this. One of the people who died was ex special forces guy in Pakistan, right? And he was just 52, right? So it's not, this disease is not going to spare anyone just because you have lived a healthy lifestyle, or you live presumably a healthy lifestyle, right? So that's my first point. Switching to Urdu now. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि लोग कोरोना SOPs को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना. अब सूरत हाल ये है कि मेरे इन-लॉज में यह के बाद दीगरे 3 अमवात हुई हैं पिछले 5 या 7 दिनों में. ठीक है, और इनमें 2 मियाँ बीवी थे जिनकी चले उम्र ज़्यादा थी, लेकिन तीसरे फर्द जिनकी डेथ हुई है, उनकी उम्र 52 साल उम्र थी, और वो रिटायर्ड फ़ौजी, और उनमें भी रिटायर्ड फ़ौजी में भी SSG से उनका ताल्लुक़ था. तो ये लोगों का जो ख्याल होता है कि मैं बड़ा सेहतमंद हूँ, मैंने डोले शोले बनाए हुए हैं, मैं वर्जिश करता हूँ, मैं वॉक करने जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ. ये इस तरह नहीं होता है ना. ये आप अपनी हिफाजत करने के लिए बेहतरीन हिफाजत मास्क है. हम मास्क पहन नहीं रहे हैं. हम सबको ये लगा हुआ है कि भाई मास्क पहनूंगा तो मैं अजीब लगूंगा, और किसी ने नहीं पहना मैं नहीं पहनूंगा. ठीक है, अब मैं ज़रा कुछ आपसे अर्ज़ कर लूँ कि ठीक है, मैं सेहत अपनी बड़ी अच्छी रखता हूँ, मैं भाग भी बहुत अच्छा सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फुटपाथ की बजाय सड़क के बीच में चलना शुरू कर दूँ कि भाई मेरी सेहत बड़ी अच्छी, मैं भाग जाऊँगा, गाड़ी पीछे से आएगी मैं भाग, गाड़ी से तो मैं नहीं भाग सकता. ठीक है, ये कोरोना इसी तरह है ना, हमें नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये बला है. तो इसके लिए आपको से मेरी दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी SOPs का ख्याल रखें. एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, लोगों का ये ख्याल है कि भाई वैक्सीनेशन शुरू हो गई है तो बस अब एक दफ़ा वैक्सीन लग जाएगी, बस अब मैं महफूज हो गया. वैक्सीन एक हद तक आपको हिफाजत देती है, और जैसे कि साइंस दान कह रहे हैं कि भाई ये आपको
کی بیماری کی سیویرٹی یا شدت کو کم کرے گی، یہ آپ کی آپ کو وہ جو اس حالت میں نہیں پہنچنے دے گی جہاں پہ آپ وینٹیلیٹر پہ جائیں اور جان چلی جائے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو اس سے بچائے گی. بیماری پھر بھی لگ سکتی ہے، اور میں بہت سے لوگوں جن کو لگ چکی ہے، جو ٹھیک ہو چکے ہیں، وہ ان کے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت اب تو میرے میں جان نہیں رہی ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں 5 منٹ کوئی چیز کرتا ہوں، پھر میں 3 گھنٹے آرام کرنا پڑتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے جا کے کھانا بنا لوں، میں اٹھ کے جا کے کھانا کھا لوں، یا کسی سے بیٹھ کے بات کر لوں، یا فون پہ کسی سے بات کر لوں. تو کیوں اپنے آپ کو ہم اس حالت میں ڈالیں، اس سچویشن میں ڈالیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ لگ جائے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ بھئی ہم محفوظ ہو گئے ہیں. تو پھر یہ کہوں گا کہ سب سے بہترین طریقہ اس میں یہ ہے کہ ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں. My second point, switching back to English, my second point is that people are getting this assumption that now that vaccination has started, we are going to be magically protected by this. The vaccine is here, it's over, it's done, right? Once I get the vaccination, everything is fine. Now, we know this is not true. The science is saying it's not true because the different variants have developed now, and we cannot be sure of which variant we are going to be hit by. Vaccination is merely providing us some protection from the most serious illness, or maybe giving us a bit of insurance against certain death. Right? It still does not protect us from the after effects of when you get COVID. I have heard from numerous people say that they have simply lost their will to carry on. They suffer from weakness, they suffer from anxiety, they suffer from depression. So it's not really smart to go around thinking that once I get vaccination, I am safe from this disease. In the end, I'd just like to say that the best defense for all this is keeping ourselves safe by wearing a mask, cleaning our hands regularly, and maintaining social distance, even if we get vaccinated, because vaccines are not the cure for everything in this scenario. No, vaccine is just giving us a bit of protection. No, we still have to do the common sense thing. Why tempt the fate, right? Let's be sensible about things and do sensible things, to protect ourselves, and more than that, to protect our loved ones, because maybe we would be asymptomatic, but we could pass it on to someone with a compromised immune system, or someone who's old or cherished. So please be careful and continue protecting yourself, right? It's not the end of the world, but being sensible is the way to go. In the end, thank you very much for listening to this rant in 2 languages. If it is confusing, I apologize. And if you have not subscribed yet, please consider subscribing to the channel. Thank you.